Hello connections. I hope you are doing well. In this video we will learn about how to replace and create the certificate for the management interface. आपने देखा होगा कि जब हम गूगल की साइट्स एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे सिक्योर लिखा हुआ आता है, राइट? जबकि जबकि पालो अल्टो एक्सेस करने पे ये नोट सिक्योर आ रहा है। google.com आई होप काम करेगा। ठीक है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सिक्योर लिखा हुआ है, मतलब एसएसएल सर्टिफिकेट हमारे ब्राउजर पे शो हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा देगा एसएसएल सर्टिफिकेट। ओके, सो मैनेजमेंट अगर आपको मैनेजमेंट इंटरफेस, अगर आप कोई भी इंटरफेस पे अगर आपको अलाउ करना है तो सिंपल ट्रिक है। आप इन नेटवर्क सेक्शन, इन इंटरफेस मैनेजमेंट, here you need to enable https on the interface management profile. Okay, so through this option, like click OK and push your commit, then you will be able to access your Palo Alto through the this interface। जहाँ पे भी वो प्रोफाइल लाइक होल्ड करती है किसी भी इंटरफेस पे, उस इंटरफेस को आप HTTPS से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है। अब हम इस इंटरफेस के लिए, मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं। ओके, so this is our certificate section. Here we need to generate and give the name mgmt cert, put our inside IP, click on certificate authority CA. Here you need to put the IP, same IP of our inside IP, click OK, what email it, download 10 dot. Okay, created. Now we need also create one SSL TLS profile as well. Here we put the name mgmt profile. Okay, put select our created certificate here, और इस प्रोफाइल को जो है हम अटैच करते हैं अभी in this setup option section. All settings done into the device option, like we need to get certificate, then SSL TSL certificate service profile, then into the management setup management. Here we need to add this certificate, sorry, this profile, SSL TSL profile, and push it. After that we can access our like Palo Alto into secure mode. Okay, so here we push our profile name and click OK. Now commit। ओनली तीन ही चेंजेस करने की जरूरत है आपको। मैं यहाँ पे टाइम चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज एरर देगा। तो खैर ठीक है, देखते हैं, रियल टाइम में देखते हैं।
our commit about to success complete. Okay, so it's complete. Web server will be restarted once. Okay. ठीक है, अगर आपको सेल्फ साइन सर्टिफिकेट अगर रिप्लेस भी करना है तो आप जो है न्यू क्रिएट करके और उसको जो आपका मैनेजमेंट प्रोफाइल के लिए जो आपने सर्टिफिकेट जो बना रखा है, तो प्रोफाइल बना रखी है, तो वहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो नया सर्टिफिकेट बनाओगे आप इन दिस सर्टिफिकेट सेक्शन, और इन एस एस एल टी एस एल सर्विस प्रोफाइल के अंदर उस सर्टिफिकेट को बाइंड करोगे उस प्रोफाइल के साथ में, तो ऑटोमेटिक वो उस इंटरफेस पे अप्लाई हो जाएगा, राइट? तो आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो सर्टिफिकेट को। I think it is done now. Can I open the new? Okay, one thing more. Okay, so now it's completed. Here we can see we need to install the certificate in our local system. One second, I just download it. So this is our certificate. I export the certificate in our local system. इस सर्टिफिकेट को जो आपने यहाँ से डाउनलोड किया है एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट से, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा अपने लोकल सिस्टम पे, जिस पे भी आप ये एरर देखना नहीं चाहते हो। तो इसको रूट में आप डालना पड़ेगा। उसके बाद में सिंपल आपको या तो आप ब्राउज़र को रिस्टार्ट कर लो, या फिर आप एक बार इसको रिबूट ही कर लो सिस्टम को। मैं इसको रिबूट कर रहा हूँ, 1 सेकंड। आप ब्राउज़र को रिस्टार्ट करके भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, तो मैं डायरेक्ट इसको रिस्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो रियल सिनेरियो में आप इसको ब्राउज़र को रिस्टार्ट करके और हिस्ट्री वगैरह क्लियर करके फिर ट्राई कर लेना, हो जाएगा काम आपका। Login into our system, local system. Now we try to access our management IP, like Palo Alto through the management IP. आई थिंक ये एरर देगा टाइम टाइम को लेके, क्लॉक को लेकर के, तो अभी देखते हैं।
ओके, तो आई एम एक्सेसिंग माई पालो टू फायरवॉल। ओके, तो इसे टाइम का दे दिया यार, इसको चेंज करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 18, 18 बोले तो 6:56। ठीक है, करेक्ट है। 25 तारीख हो गई आज की, ठीक है हाँ। So now you can see our management interface is secure now, and it's showing our newly created certificate details, which is issued to this IP, issued by this IP, and now it's showing secure. Okay, so my purpose is complete now, and I just logged in. Once I logged in, तो जो हमारा गोल था, मोटिव था, वो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। हमने हमारा जो मैनेजमेंट इंटरफेस था उसको हमने सिक्योर कर लिया है। तो ऐसे ही आप अपने अचीव कर सकते हो आप अपने गोल्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक certificate for the management interface, how we can create and replace. And it's have only three steps. Like first of all we create certificate, then we create TSL SSL profile and bind with the management in the setup management. Here we there we like in this in management we can see the management sorry SSL TSL certificate option. So we have three options only to achieve this goal. Okay, so thank you so much, have a nice day, bye bye.